Good morning, students. Last time we had finished with essay writing, I think, and now we should start with lesson 22 of your textbook, that is synonyms and antonyms. Synonyms are basically same meaning words, that is, you can say samanarthi, that is the meanings of the words, as and antonyms are the opposites, right, of whatever the word is given uska opposite is the antonym. So let us study some synonyms. That is abandon matlab ekdam veeran kar dena, leave. Absurd, silly, ridiculous. Abundant, plentiful. ये abundant अलग है and this abundant मतलब काफ़ी सारा, ढेर सारा, that is plentiful. Adequate, we are doing synonyms, huh? Adequate मतलब sufficient, काफ़ी सारा. Admire, praise, appreciate. Adversity, misfortune, मतलब कुछ गलत होना. Affectionate, that is loving. Aim, object, purpose. Allow, permit. Amusement, enjoyment. Entertainment. Ancient, old, antique. This is QUE, but it is pronounced as antique. QUE antique क्यों नहीं pronounce होता है. Answer, reply, appear, seem, assemble, gather, collect. Then assistance, help. Astonish, amaze, एकदम छक हो जाना, that is astonish. Attempt, try. Awkward, clumsy. Base, mean. Ignoble. मीन मतलब स्वार्थी होना. बिगिन, कमेंस, स्टार्ट. ब्लेम, अक्यूज. ब्लैंक, एम्प्टी. ब्लिस, हैप्पीनेस, जॉय. ब्लंडर, एरर, मिस्टेक. ब्रेव, करेजियस, डेयरिंग. heroic. Brutal, savage, cruel. Calm, quiet, peaceful. Catch, seize. Circular, round. Clean, neat. Clever, able, smart. Coarse, rough. Command, order. Common, usual, ordinary. Conceal, hide. Concise, short, brief. Contrary matlab opposite, right? On the contrary, we say in the sentences. It's a phrase, on the contrary. Cordial, warm, friendly. Damage, loss, harm, injury. Decorate, adorn. Desperate, hopeless. Despise, scorn, hate. Disgrace, dishonor, shame मतलब insult करना. Economical, frugal. Eminent, outstanding. Enemy, foe, दुश्मन. Enough, sufficient. Extravagant, wasteful, spendthrift. Spendthrift मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला, unnecessary पैसे waste करने वाला, that is called an extravagant. False, untrue, foolish, silly, stupid. Gaiety, joy, happiness. Genuine, that is real. Haughty, arrogant, proud. High, tall, lofty. Humane, that is kind. Humility, modesty, politeness. Lament, grieve, mourn. Lenient, mild. Lively, active. Loyal, faithful, devoted. Lucky, fortunate. Magnificent, splendid, मतलब बहुत beautiful. Right? Impressive, grand, marvelous, wonderful. Mercy, pity, मतलब दया करना. Mighty, that is strong, powerful. Misery, sorrow, distress. Sorrow मतलब ये करना, गम करना किसी बात का. Then mockery, mockery मतलब नाटक करना. Ridicule, pious, holy, devout. Pride, vanity, conceit. Arrogance, pride मतलब घमंड करना. Renown, fame, reputation. Rigid, stiff, unyielding. Ruin, that is destruction. Sacred, holy. Savage, wild, barbarous. Scold, chide, rebuke. Serious, grave, earnest. Stationary, still, motionless. Stubborn, obstinate. Sympathy, pity. Tame, gentle, mild. Then thankful, grateful, obliged. Tough, hard, strong, difficult. Ugly, repulsive. Ugly मतलब बहुत बुरा दिखने वाला. Weary, tired. Wealthy, rich. Wholesome, healthy, sound. Wickedness, evil. Wild, savage. Wish, desire.
wretched, miserable, unfortunate, wreck, ruin, destroy, yield, surrender, zeal, passion, राइट. zeal मतलब पैशन, कोई चीज़ को करने का आपके अंदर जो एक्साइटमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड zeal, दैट इज पैशन. नाउ गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. हाई, you have to find out the synonyms of these words from the given examples. You must be given every each one of them there. Now high, let us find out what is the high. Is tall and lofty, right? So then proud is here, it must be given pride. Proud and pride must be same only. Conceit, arrogance, to feel proud, right? Then allow is to permit. Then savage is wild and barbarous. Then lucky is fortunate. That way you have to find out false, weary, quiet, magnificent. That you do it in the homework. Here is a list of jumbled words. Arrange them in 5 pairs of synonyms. Jumbled words, okay. Hide is conceal, chupana, right? Error is mistake, error and mistake. Then enough is sufficient. Gather is assemble. Okay. Empty is blank, you can say. Yeah, so each and everything is done. Okay. So now let us move on to antonyms. Antonyms मतलब opposites होते हैं. So let us read them. Above, below. ऊपर मतलब नीचे, अबाउ मतलब ऊपर एंड बिलो मतलब नीचे. एक्सेप्ट, रिफ्यूज, रिजेक्ट. एक्नॉलेज, डिनाई. एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना कि ये हुआ है, या डिनाई उसका अपोजिट डिनाई करना, मना करना. एक्टिव, पैसिव. एक्टिव पैसिव किया है हमने, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बोथ आर अपोजिट्स. एक्यूट, डल. एडमायर, डिसलाइक. एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी. अग्री, डिफर. एंशंट, मॉडर्न. अराइव, डिपार्ट. अराइव मतलब आना, डिपार्ट मतलब जाना. एरोगेंट मतलब बहुत घमंडी. हम्बल मतलब एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन. आर्टिफिशियल मतलब झूठा, राइट. फॉल्स. नेचुरल मतलब एकदम नेचुरल जो है वो. एसेंड, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग यू मस्ट हैव लर्नड इन मैथ्स. सो असेंड मतलब ऊपर जाना, डिसेंड मतलब नीचे आना, right. Ascend मतलब to climb the stairs, descend मतलब to climb down the stairs. Attack, defend, protect. Attack मतलब attack करना, defend करना मतलब अपने आप को बचाना, protect करना. Barbarous, civilized. Then barren, fertile. Barren मतलब बंजर, fertile मतलब उपजाऊ. Base, noble. Base मतलब यहाँ हमने पढ़ा था base का meaning. 1 minute. I think यहाँ पढ़ा था, it was base. Yeah, base means mean and ignoble मतलब बहुत स्वार्थी, right. And here it is noble. Beautiful, ugly. Beginning, end. Blunt, sharp. Blunt मतलब जो पेंसिल आपका ब्लंट हो जाता है. शार्प इज शार्पन्ड. बोल्ड, टिमिड. बोरो, लेंड. ब्रेव, कावर्डली. ब्राइट, डल. ब्रॉड, नैरो. बिजी, आइडल. केयर, निग्लेक्ट. सर्टन, डाउटफुल. चीप, डियर. कॉस्टली. कंसील, रीविल. कंसील का अपोजिट है रीविल, और कंसील का मीनिंग है टू हाइड, राइट.
So that way you have to remember the antonyms and synonyms in a different way. Condemned, approve, acquit. Confess, deny. Conquest, defeat. Convict, acquit. Create, destroy. Credit, debit. Cruel, kind. Danger, safety. Deep, shallow. डीप मतलब बहुत गहरा, शैलो मतलब ज़्यादा गहरा नहीं. डिफ़िकल्ट, ईजी. डिमिनिश, इंक्रीज. अर्ली, लेट. एनकरेज, डिस्करेज. एक्सटीरियर, इंटीरियर. एक्स्ट्रावेगेंट, फ्रूगल. थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल. फेलियर, सक्सेस. फेयर, फाउल. फॉल्स, ट्रू. फेमस, नोटोरियस. फेमस मतलब गुड सेंस में फेमस, एंड नोटोरियस मतलब फेमस सही में, पर कुछ अलग या विकेड प्रैंक्स प्ले करके जो फेमस होता है, दैट इज़ नोटोरियस. फाइनल, इनिशियल. फ्रीडम, स्लेवरी. फ्रेश, स्टेल. फ्रेंड, फो. एनिमी. फ्रेंडशिप, एनिमिटी. फुल, एम्प्टी. गेन, लॉस, लूज. ग्रांट, विथहोल्ड. ग्रेट, स्मॉल. ग्रांट मतलब अप्रूव करना, विथहोल्ड मतलब नहीं देना. Great, small. Happiness, misery, sorrow, grief. Hard, soft. Haste, delay. Hate, love. High, low. Honor, shame. Hope, despair. Hope करना या hope छोड़ देना, that is despair. Humble, proud, haughty. Import, export. Include, exclude. Include करना मतलब ले लेना, exclude करना मतलब निकाल देना. Inferior, superior. Inner, outer. Innocent, guilty. Junior, senior. Knowledge, ignorance. Large, small. Light, dark, heavy. Long, short. Loose, tight. Make, mar. Make मतलब बनाना. Mar मतलब तोड़ देना. Master, servant. Oral, written. Pardon, punish. Particular, general. Peace, war. Permanent, temporary. Physical, spiritual. Pleasure, pain. Plenty, scarcity. Profit, loss. प्लेंटी मतलब बहुत सारा, स्कैर्सिटी मतलब कम होना. प्रॉफिट, लॉस, दैट यू नो. पनिश, रिवॉर्ड. क्विक, स्लो. रिमेंबर, फॉरगेट. रिच, पुअर. सेवेज, टेम, सिविलाइज्ड. सेवेज मतलब जंगली, वाइल्ड. एंड टेम, सिविलाइज्ड मतलब पाला हुआ या डिसेंट. शार्प, डल, ब्लंट. सिकनेस, हेल्थ. स्लो, फास्ट, क्विक, रैपिड. Smooth, rough. Strange, familiar. Strict, lenient. Strong, weak. Sweet, sour, bitter. Thick, thin. Virtue, vice. Wide, narrow. Wild, tame. Win, loss, lose. Within, without. Right? Now there are certain prefixes को add करके antonyms भी बनते हैं. That we shall study what type of prefixes you can add to make different antonyms. So there a large number of antonyms are formed by adding prefixes to words. Study the following examples with dis add करके. Advantage, disadvantage. Agree, disagree. Appear, disappear. Approve, disapprove. Honest, dishonest. Honorable, dishonorable. Like, dislike. Order, disorder. Own, disown. Please, displease. Qualify, disqualify. Respect, disrespect. Satisfy, dissatisfy. With, in को ऐड करके how you make the antonyms that we shall study. Comparable, incomparable. Complete, incomplete. Correct, incorrect. Definite, indefinite. Direct, indirect. Divisible, indivisible. Formal, informal. Human, inhuman. Sensible, insensible. Sincere, insincere. विथ आई एल और आई एम उसको प्रिफिक्स में डाल के. प्रिफिक्स वो होते हैं जो आप वर्ड के पहले लगाते हो, एंड सफिक्सेस वो होते हैं जो वो वर्ड के एंड में लगाते हो. प्लीज़ रिमेंबर दिस. सो दीज आर द प्रिफिक्सेस. सो यू एड इट बिफोर द वर्ड स्टार्ट्स, राइट? लीगल, इलीगल. लेजिबल, इलेजिबल. लिटरेट, इलिटरेट. मॉरल, इमोरल. परफेक्ट, इम्परफेक्ट. पॉसिबल, इम्पॉसिबल. प्रोबेबल, इम्प्रॉबेबल. देन un ऐड करके. एबल, अनेबल. सर्टन, अनसर्टन. इक्वल, अनइक्वल. फेयर, अनफेयर. फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट. हैप्पी, अनहैप्पी. सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल. सूटेबल, अनसूटेबल. अदर प्रिफिक्सेस नॉर्मल, एबनॉर्मल. रिलेवेंट, इररेलेवेंट. एंड रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल. IRR भी कभी कभी ऐड होता है.
Now you have to give the antonyms of the following words. Fertile, barren. Humble. Humble का क्या था? That you will find it out. All these words are given here in the your list of antonyms, right? So you can find them out as you did it in synonyms and solve the exercises. It's very easy. These are the jumbled words. Antonyms by adding prefixes: fair, unfair, honest, dishonest, correct, incorrect, legal, illegal, responsible, irresponsible, tidy, untidy, justice, unjust, injustice. It is I, है ना? Then normal, abnormal, moral, immoral, visible, invisible. Then ये जम्बल है, उसको अरेंज करके 5 पेयर्स बनाने हैं एंटोनिम्स के. वाइज, फुलिश, देन वॉर, पीस, ट्रू, फॉल्स, क्वाइट, नॉइजी, ऊपर नीचे ही है, सेफ्टी, डेंजर. राइट, सो we have solved the exercises herewith. Now next comes the idiomatic expressions. Idiomatic expressions, we will read it out next time. All these synonyms and antonyms you will write one time in your notebook as your homework in your grammar notebook. Please write down and learn all the synonyms and antonyms and solve the exercises as described in the video. So our lesson will be over. Next time we shall do idiomatic expressions and read out and solve the exercises linked to it. And then improving spellings, you have to just read, go through. I am not going to read out or make a video on it because it's just improving your spellings. It will give you a better idea how you can improve your spelling. So just read out all the rules how to make different spellings, right? They have given different word endings and word startings and everything, right? So just go through it. The lesson will help you to improve on your spellings. So it's just for reading purpose. And then solve review 3. Idiomatic expressions I will take up next time, and then I think we shall do one topic that is speech writing next time. Essay writing we have already done, so 2 subjective topics we will take this time. And further, if time persists, next unit of your Gujarat board textbook that we shall solve. So we stop here today. Write down all the exercises as instructed.